नमस्ते, जय हिंद। क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट पे हम एक बार फिर आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। हमेशा की तरह मैं आपके साथ उपस्थित हूं। क्रिकेट की सारी खबरें, जानकारी, आईपीएल पर फोकस। आनंद नरसिम्हन मेरा नाम है और मेरे साथ कुछ हैं क्रिकेट क्रेजी दोस्त। उनमें से एक है जिसके इनिशियल्स मैं हमेशा कहूंगा क्रिकेट नेक्स्ट से मिलते हैं, CN। CN यानी क्रिकेट नेक्स्ट, CN यानी चेतन नरूला। फिर बफर होकर आ रहे हैं, हंसते हुए खिलते हुए आते हैं, हाँ। देखिए। बफर होकर आते हैं। चलिए, बफर एक्चुअली होकर क्या है, आते आई हैं। हैव टू नेटवर्क्स, तो उसमें वो इंटरचेंज होता रहता है, तो दो होता नेटवर्किंग को रहता आपस है। में इंटरचेंज होता रहता है। लेकिन बफर होकर आरसीबी की भी किस्मत आ रही है। देखिए, कल उन्होंने टॉस ओ जीता, केकेआर से बल्लेबाजी कराई और देखिए खामियाजा भुगतना पड़ा। आनंद, I'll give you a couple of stats, okay? हम्म अभी तक उन्होंने 5 होम गेम्स खेले हैं, जिसमें से हम्म 5 या 6 होम गेम्स खेल लिए हैं। उनका एक होम गेम बचा है। उन्होंने बचा दे है। प्लेड 6 होम गेम्स में से इन 3 होम गेम्स द विजिटिंग टीम हैज स्कोर्ड 200 जी। एंड उसमें से 3 में से एक बार विजिटिंग टीम हैज चेज्ड 200 200। and every time a visiting team has scored 200, Bangalore has lost all 3 occasions. एंड देन एवरेज स्कोर क्या है आपका? 5 मैच हो चुके हैं, सॉरी 6 मैच हो चुके हैं। इन 6 मैचेस योर विजिटिंग टीम्स एवरेज इज 191, और वो 191 भी इसीलिए है क्योंकि मुंबई ने 170 बनाए और दिल्ली कैपिटल्स ने 150 बनाए। नहीं तो 150 दैट बनाए, इज दैट वो भी 190 200 और हो जाए। 200, वो भी 200। सो इन 6 होम गेम्स इफ द एवरेज विजिटिंग स्कोर इज 200 और क्लोज टू 200, होम एडवांटेज किधर है? T20 क्रिकेट में जब 200 रन आपकी विजिटिंग साइड ऑन एन एवरेज बना रही है, वेयर इज द होम एडवांटेज? आरसीबी, आई विल से इट अगेन, आई हैव सेड इट बिफोर, आरसीबी प्लेज विदाउट एनी होम एडवांटेज। इतने छोटे ग्राउंड पर आप इतनी बैटिंग ब्यूटी बना दोगे तो कुछ नहीं हो सकता। एंड इन एन आईपीएल सीजन इफ यू आर लूजिंग 3 होम गेम्स बिकॉज द विजिटिंग साइड इज स्कोरिंग 200 रन्स, योर सीजन इज गॉन। वो तो योर सीजन इज गॉन। ठीक है। आप ये पॉइंट पहले भी बोल चुके हैं और मैं इस पॉइंट से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि यार आपने बैटिंग ट्रैक बनाया, आपका और छोटा पहले बैटिंग ग्राउंड नहीं है, किया। आप पहले बैटिंग नहीं कर रहे हो। मेरा प्रॉब्लम उसका वहां मैं है। रीजन बताता हूँ। मेरा प्रॉब्लम वहां है। उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि उसका रीजन है कि कैप्टनसी के ट्रेड्स होते हैं। फाफ डू प्लेसी एज अ कैप्टन लाइक्स टू बैट फर्स्ट. Virat Kohli as a captain, as a batsman likes to chase. So when as a batsman he likes to chase, his team likes to chase. ये हमने इंडियन टीम के साथ बहुत देखा है कि इंडियन टीम started to chase very well under Virat Kohli, but that was Virat Kohli who was chasing. So if it was Faf yesterday, I'm pretty वो sure they would बैटिंग have करते batted पहले, first. वो पहले बैटिंग बैटिंग करते करते हैं, पहले। क्योंकि आप केकेआर की क्या वीकनेस है? केकेआर की वीकनेस उनकी बैटिंग है। आप 200 रन बनाओ, दे आर अंडर प्रेशर। लेकिन आप करेक्ट। अगर उनको 200 रन बना के खुद को प्रेशर में डालने का मौका दे रहे हो, तो वो तो अतिथि देवो भव करेंगे ही ना कि भैया। सो लेकिन दैट इज इनका दैट इज द प्रॉब्लम विद आरसीबी। एक और प्रॉब्लम ये है कि आरसीबी की बॉलिंग इतनी खस्ता हाँ है, हाँ 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 हाँ। और एक और स्टार्ट इतनी भी दे देता हूँ मैं खस्ता आपको। है। एक और स्टार्ट भी दे देता हूँ। उन 6 होम गेम्स में एवरी विजिटिंग साइड, इवन दिल्ली कैपिटल्स व्हेन दे स्कोर्ड 150 रन्स, हर विजिटिंग साइड ने पूरे 20 ओवर खेले हैं। They have not been able to bowl out a visiting side on their home ground. कहाँ का होम एडवांटेज है ये? कौन सी दुनिया का होम एडवांटेज है ये? उसमें एक चीज है कि देखिए, विराट मोहम्मद सिराज को छोड़ के उनके इसमें कोई बॉलिंग लाइनअप में कोई जादुई गेंदबाज नहीं दिख रहा है मुझे। वनिंदु हसरंगा यस्टरडे ही बोल्ड वेल, 4 ओवर में 24 रन दिए। सिराज ने 4 ओवर में 33 रन दिए। हसरंगा ने 2 विकेट लिए, सिराज ने 1 विकेट लिया। ये तो कुल मिला के 8 ही ओवर हुए ना। लेकिन तो ये 8 ओवर में अगर आप आंकड़े देखें, इन 8 ओवर्स में आरसीबी ने, केकेआर ने इनसे कुल मिला के 57 रन खींचे हैं। 8 ओवर में 57 रन आप देखें तो लेस देन 7 रन पर ओवर, 8 रन पर ओवर इनका रन रेट है, या 7 रन पर ओवर ही इनका रन रेट है। 7 रन के 8 ओवर में इन्होंने 7 रन के एवरेज पे रन बनाए। उसके बाद जो बाकी 12 ओवर हैं उसमें इन्होंने रन खींचे हैं, उसमें इन्होंने 150 से ज्यादा रन बनाए, 150 रन बनाए। आप सोचिए तो सही, तो यानी कि बाकी बॉलिंग इतनी खच्चर बॉलिंग है, इतनी खस्ता बॉलिंग है। जेबी ऑल्टर इज विद अस। जेबी इज वेटिंग टू से समथिंग। यस जेबी। Exactly. Good use of this word. After a long time, I've heard this word खच्चर being used. जब 15 साल से आपके bowlers खच्चर हैं, why do you choose to field?
The moment you concede more than 190, you have lost the match. I don't understand Virat Kohli's thinking. कार्तिक आउट हुआ, आधा स्टेडियम वहीं खाली, बाकी सारे गाली दे रहे थे. आई वॉच 3 लाइव स्ट्रीम यस्टरडे. फैंस इनको गाली दे रहे हैं. अनिल कुंबले सर्कल. व्हाई डू यू चूज टू फील व्हेन योर bowling is so rubbish? I don't get this, and I hate that line. They want to know what they're chasing. I'll tell you, you're chasing 15 runs too many. Chetan, please shed some light on this subject for me. नहीं, ये वही बात अभी हम आपके आने से पहले वही कह रहे थे कि कैप्टेंसी का चेतन वही I probably missed it. Yeah. कैप्टेंसी का फर्क पड़ता है. विराट कोहली को चेज करना अच्छा लगता है और फैफ टू प्लेसी ये चीज अगर कैप्टन जेमी आप नोटिस करो, जब वो इंडियन टीम के कैप्टन थे, चाहे ओडीआईज हो चाहे टी20s हो, इन मोर देन 95% सिनेरियोज विराट कोहली हैज ऑलवेज ऑप्टेड टू फील्ड. एंड एज ऑलवेज अ टीम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ कैप्टन्स ट्रेट्स. विराट कोहली एज अ बैट्समैन लाइक्स टू चेस. Simple as that. Now the question here is कि क्या विराट कोहली को अगर चेज करना पसंद है तो क्या बाकी बैट्समैन को भी चेज करना पसंद है, या क्या आपकी टीम की काबिलियत है चेज करने की? आप मुझे एक छोटे से सेंस की बात बताइए. केकेआर का आपने 7 मैच देखे हैं. व्हाट इज देयर वीकनेस? देयर वीकनेस इज बैटिंग. आप 200 रन बनाइए, उनको प्रेशर में डालिए. यू आर गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू बैट फर्स्ट एंड पुट यू अंडर प्रेशर. Exactly. Thank you for saying that. I was having this argument with 3 guys. What's up? मैंने कहा नहीं कोहली, but कोहली was the master of the chase. कोहली ने इस साल कितने मैच जिताए अपने बैट से? 1. और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं और हेल्प कर देता हूं आपको, थोड़ी स्टैट्स और शेयर कर दीजिए. अभी तक 6 होम गेम्स में से 3 होम गेम में द ट्रैवलिंग साइड हैज स्कोर्ड 200 प्लस. एवरी टाइम अ ट्रैवलिंग बिल्कुल खच्चर बॉलिंग लाइक आनंद said. Every time 200 plus they lose. Second, the average score of a visiting side in those 6 games is 191. Yep, there you go. तो बात 200. अभी आप एक और चीज देखिए. कल के मैच में उसी पिच पर मैं खच्चर बॉलिंग क्यों कह रहा हूं. 6 बॉलर्स आरसीबी ने यूज किए. उन 6 बॉलर्स में से अगर आप आंकड़े देखेंगे, उन 6 बॉलर्स में से सिर्फ एक बॉलर है जिसका इकोनॉमी रेट 6 का है. मोहम्मद सिराज है जिसका 8.25. तो आप मान लीजिए 2 बॉलर्स हैं जिनका इकोनॉमी रेट 10 से नीचे है. वहीं अगर आप केकेआर को देखें, केकेआर ने 7 बॉलर्स यूज किए और उनके 1 2 3 4 बॉलर्स ऐसे हैं जिनका 10 से नीचे इकोनॉमी रेट है. सुनील नारायण 10.25 है और वैभव अरोरा 11 है. एक ही बॉलर उमेश यादव है जो 1 ओवर में 19 रन के लिए पिटा. वहीं शाहबाज अहमद है जो 1 ओवर में 25 रन के लिए पिटा. तो आप अपनी बॉलिंग एबिलिटी ही नहीं है. और इस पिच मैं ये कह रहा हूं कि 6 मैचेस अगर आपने घर पे खेले हैं और आपको पता है पाटा विकेट है, छोटा ग्राउंड है, तो आपके बॉलर्स को तो इतना तो पता होना चाहिए कि होम ग्राउंड पे मुझे किस तरह से बॉलिंग करनी है ताकि रन ना बने. ये भी आपके बॉलर नहीं कर रहे हैं. और एक और चीज, मोहम्मद सिराज. हाँ, इज सिराज अ वर्ल्ड क्लास व्हाइट बॉल बॉलर? No, he's not. He has had a good run this year in white ball cricket. He is improving in white ball cricket. But is he a world beater in white ball cricket? No, he's not. आपने उसको रिटेन किस भरोसे से उसको रिटेन किया है? And you let go of somebody like a Yuzvendra Chahal. I was having this conversation on Twitter with somebody and they said कि when I raised this question yesterday on Twitter कि where is the home advantage? और मुझे ये जवाब आया है कि आप 15 साल से वही कर रहे हो, आटा विकेट बना के पिट रहे हो. आप स्लोअर विकेट बना लो, एटलीस्ट योर बॉलर्स विल हैव अ चांस. पीपल आस्क कि व्हाई युजवेंद्र चहल वाज सक्सेसफुल एट चिन्नास्वामी. इट वाज बिकॉज़ ही bowled slowly, he bowled with variations. He was in 15 years your best bowler. और आपने उनको ही रिटेन नहीं किया. मतलब आई डोंट वांट ये देखिए, ये युजवेंद्र चहल की पहेली मुझे बहुत अजीब लगती है कि चहल को हर कहीं पर क्या, बिकॉज वो साइड लाइन में वो और सोशल मीडिया पे और वो जो ऑफ द फील्ड जो काम कर रहे थे उसकी वजह से क्या उनका इक्वेशन, उनका वैल्यू एज अ बॉलर कम हो गया? होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो अलग से वो अलग है, फील्ड पे काम अलग है. तो क्या वजह है कि युजवेंद्र चहल को वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही? अगर आप देखें तो नेशनल साइड में भी उनको उतनी जल्दी नहीं मिल रही है जगह. आप अगर आप देखें तो एज अ स्पिनर हर फॉर्मेट में वो प्रेफर्ड नहीं है, जबकि उनके पास वो एबिलिटी है, वो हर फॉर्मेट में खेल सकते हैं. पर क्या वजह है कि यूजी को उतनी जल्दी ये नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा? उन्हें कुछ किया है, कुछ कहा है जिसकी वजह से लगता है कि वो साइडलाइन हो रहे हैं. लाइक आई एम फ्लमक्स लाइक यू आर कि व्हाई डिड आरसीबी लेट चहल गो? ओके, मी और जेमी,
You go first. With UZ, I'll just say this: कि in 2019 he had a bad World Cup and then he was sidelined a bit for that under Virat Kohli. But Rohit Sharma की captaincy में, I don't think A, Rohit Sharma trusts him as a bowler. B, I don't think he knows how to use a leg spinner. रोहित शर्मा की कैप्टनसी को जितना मैंने स्टडी किया है, आप मुंबई इंडियंस को भी देख लीजिए, द बेस्ट लेग स्पिनर देव हैड सो फार इज राहुल चहर. ठीक है, they mostly used finger spinners to get the job done. I don't think they rely on spinners as much. तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा अब तो पीयूष चावला उनका मेनस्टे है, वो एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं ना उनका. पीयूष चावला इज ऑन अ गुड रन एट द मोमेंट एनीवे, बट इन द पास्ट इट वाज राहुल चहर. तो आई डोंट थिंक रोहित शर्मा नोज हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ युजवेंद्र चहल. जहां तक आरसीबी की बात करूं कि उनको क्यों रिटेन नहीं किया गया, आप देखिए उनके रिटेंशंस क्या थे. विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक एंड मोहम्मद सिराज. आर यू किडिंग मी? Are you kidding me? मतलब आपने, you are thinking कि दिनेश कार्तिक and मोहम्मद सिराज are a better investment than your best ever bowler and somebody like Devdutt Padikkal, who's a Bangalorean, who has scored runs in the top order for you, who is a settled batsman. जब से देवदत्त पाडिक्काल आए थे तब से आरसीबी का टॉप ऑर्डर सॉर्ट आउट हो गया था. आरसीबी का बैटिंग लाइनअप तब भी सॉर्टेड नहीं था when they had गेल एंड एबी एंड विराट. एक पार्टिकल के आने से उनका टॉप ऑर्डर सेटल डाउन हो गया था बिकॉज दे गॉट एन अटैकिंग रिलायबल बैट्समैन. यू लेट गो अ मोर अटैकिंग एंड रिलायबल बैट्समैन. अब आप देखिए, शाहबाज अहमद को नहीं मालूम वो कहां बैटिंग कर रहे हैं, लॉमरोर को नहीं पता वो कहां बैटिंग कर रहे हैं, नो क्लू. दिनेश कार्तिक को पता नहीं कि वो खुद रन भाग रहे हैं या दूसरे को भगा रहे हैं. Just because Rajat Patidar is not there, your entire batting order has collapsed. I agree, but I'm also a little shocked. I want to know कि हमारे जो viewers हैं जो इस वक्त हमारे साथ इस broadcast में, उनका thought process क्या है, वो क्या सोचते हैं कि क्या problem है. I think we got a comment. We'll just try and take your thoughts there. Jimmy, you want to say something by the time I call that up? Yeah, Ji. See, the thing was with Chahal, he had that one sort of year, 2020 to 21, where he had come back from the disappointment of 2019 World Cup, just like Chetan rightly mentioned. But there is a direct link, Anand, to the 2019 World Cup. The same Jodi, the Kulcha Jodi as they were called, had done so well. It came down to one bad match. Chetan was at the ground against England, and suddenly team ka bharosa ud chuka un dono se, right? And we saw the same thing with Piyush Chawla years ago. We saw the same thing with Mishra. Leg spinners, Indian leg spinners have a couple bad matches and suddenly all that they've done seems to be forgotten. This is just my reading of it. Chahal came back from 19, but 21 mein thoda inka dip tha, right? Which leg spinner goes to the 21 World Cup? Chetan has already taken his name. Rahul Chahar had a decent season. Suddenly he usurps that leg spinner's role from Chahal, जो कि बहुत साल से वहां पे थे, right? That's the same. And Chahal says, I was shocked to know that I've been let go from Bangalore and I've also been dropped from the team, right? That Chahal, I think man to man, Chahal is far better than Chahar. Chahar goes, takes his spot, goes to the UAE and just runs drinks, right? A few weeks later, the captaincy changes. Rohit becomes the captain. Rohit's man took the spot of Virat's man. So if you read between the lines, there's a lot of background things building up to Chahal losing his spot. But yes, there was a dip. He had struggled. The wickets came down and the runs went up that year. But he did the best thing. He came back and he grabbed the purple cap the very next season to remind Bangalore and to remind Rohit Sharma and the selectors कि भाई मैं Chahal हूँ. And Jamie, मतलब आपने हसरंगा को भी उन्होंने रिटेन किया था, by the way. हसरंगा को Yes. Any sensible franchisee would have both Hasaranga and Chahal in their playing 11. Yes. Any sensible franchisee. If you are saying कि Chahal को release कर दूंगा ताकि मैं हसरंगा को खिला दूं, बॉस दोनों को खिलाओ ना, किसने रोका है? और आपको जरूरत भी है यार, आपको जरूरत भी है. And RCB भी जरूरत तो है ही, obviously जरूरत तो उनको बहुत चीजों की है. 15 साल से bowling attack की जरूरत है जो विराट कोहली नहीं बना पाए. But the fact of the matter is कि any sensible franchise would play both Chahal and Hasaranga. They would find a way to do that. Sorry, Hasaranga was not retained. Hasaranga को उन्होंने around 10 CR में खरीदा था. 10 CR में खरीदा था. The same retentions I named. But any sensible और सबसे बड़ी बात, आप ऑक्शन में चहल को आपने इसलिए रिटेन नहीं किया क्योंकि आप उसको 7 करोड़ पे नहीं मना पाए, आप उसको 10 करोड़ पे नहीं मना पाए. चहल वांटेड टू बी 12 करोड़ और 10 करोड़, वो आप उसको नहीं दे पाए. चलिए कोई बात नहीं. बट यू नो व्हाट वाज द मोस्ट शॉकिंग थिंग? आरसीबी का पैडल नहीं उठा था चहल के लिए.
पूरे ऑक्शन. Yes. Correct. Yes. They did not That's what he send a single mentioned. bid for Yuzvendra Chahal. And Chahal said कि मुझे उस बात को लेके मुझे दुख हुआ था. He said that. No, he बहुत said बहुत that. होना चाहिए, होना भी चाहिए. मुझे कुछ चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है ये काफी सारी चीजें not on field but off the field है. And also the fact that Chahal has not been able to become multidimensional. He's not a great fielder. You cannot trust him with anything with the bat. So the no adding to his dynamics and his dimensions have grown off the field. He's become a social media star. He's doing a lot of the B rolls and the off the field videos, and he's doing a lot of stuff with the BCCI production team. And I don't know if that's gone down well with he's not done so much to vastly improve his fitness. He's a slight built man. He's a slender man. That's his physiology. But the fact is, has he become fitter? Has he added another dynamic and dimension to the game, to his game? Those are things which somewhere surprise me. And maybe the way I think what he demanded for his retention, or perhaps the way he got into the auction basket, it was not all great with the RCB management, and especially with Virat Kohli. I have a feeling that that's where it is, as solid as it is. I think मैं हल्का सा वो disagree करूंगा. I think for the Indian team, I can get why certain people could have been miffed, but in the context of the IPL, someone with that much social media presence, any team would want that guy. So I don't think it's that, right? But I think the fact RCB, which is a content first team. Bilkul. So he's a perfect marketing tool for any franchise. Rajasthan have used him very, very well. But I think the fact that he goes and takes 26 wickets, right? And who was behind him? Hazaranga got 25. I think हमने शायद इस बात को लेकर बात की थी last show पे. But those matches were not played in Bangalore. This was COVID time. Matches बाहर थे, right? So उन्होंने बहुत बड़ी गलती की मेरे हिसाब से बैकिंग हसरंगा ओवर चहल. बिकॉज नाउ यू सी चिन्नास्वामी में हसरंगा ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे. चहल की खासियत ये थी कि चिन्नास्वामी में जहां पे चेतन इज बिल्कुल राइट इन सेइंग कि होम एडवांटेज इतना कुछ खास नहीं है. बट इफ देयर इज वन थिंग वर्किंग फॉर यू इन अ वेरी फीबल लाइनअप, इट वाज चहल स्ट्राइकेबिलिटी एंड इकोनॉमी इन द चिन्नास्वामी. हसरंगा लुक्स गुड 25 विकेट, लेकिन वो सारे विकेट बाहर आए थे. लेटिंग चहल गो, keeping in mind your 8 matches you'll play at home, I think that was their biggest mistake. No, see, Hasaranga yesterday was one of the best bowlers for RCB at 424 and 2 wickets. But it was his first good match. He was crack in all the other matches. I totally agree where you're coming from, but it's a conundrum for me that on a batting track, when you're wanting batting privileges, you at least will get strong bowlers into your lineup. And Chetan is right when he says कि यार 15 साल में you've not got a bowling attack that can win you matches hands down, that can knock out teams. Most of the visiting teams have played their full 20 overs. That itself is a reflection ना कि आप उनको out नहीं कर पा रहे. Who do we blame for this? I said it before on this show. I blame Virat Kohli. Virat Kohli. I agree. Absolutely. And I'll add to it. Why? Virat Kohli as captain of RCB has enjoyed power like no other captain. मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि धोनी के पास इतनी पावर नहीं थी जितनी पावर शायद RCB पे विराट कोहली के पास थी as a captain. To choose the side, to mold the side the way he wants. CSK में there is still one top dog above MS Dhoni. There's still one top dog above MS Dhoni. Absolutely. RCB में the day Vijay Mallya left, there is no top dog greater than Virat Kohli at RCB. आपकी everything, your team, your strategy, everything. If it is being formalized today as per Virat Kohli when he's the stand-in captain, imagine how it was when he was the full-time captain. So in 15, let's say in 7 years or 8 years, whatever time he managed to, I think there were 2 mega auctions when he was captain of RCB, 2 mega auctions at least. Are you telling me he could not formulate a bowling attack from the world's cricketers good enough to beat? I have a feeling good enough to win an IPL. One gets the feeling that he got his judgment right when it came to batting to a certain extent, and he was also able to shoulder bulk of the load largely across seasons. But when it comes to bowling, they backed the wrong horses. They picked the wrong guys. And see, look at that Harshal Patel. सब जगह सुताई हो रही है उसकी, हर मैच में सुताई हो रही है. Because he's been found out. Na? He refuses to learn. उसको लगता है कि if he thinks he can bowl 24 slower deliveries in a match at Chinnaswamy,
नहीं होगा यार, पकड़ लेते हैं लोग आपको, ये He's गेम been में found इतना out. इवॉल्व करना पड़ता है, इतना इवॉल्व He's been करना found पड़ता है, out. क्योंकि हाँ, एक मैच 2 मैच के अंदर आपके टेप्स को इतनी बार देख के लोग आपकी पकड़ लेते हैं, आपको खुद अपने टेप को देखकर कुछ ना कुछ नया इवॉल्व करना पड़ेगा। यस जेमी। Two things. I said it before. You've heard this. Questionable judge of conditions slash pitches and questionable judge of his own players' capabilities and fitness. The one blemish against Virat Kohli's otherwise fairly successful captaincy tenure. Yeah, India, best match India, is India. Forget India. RCB. India, 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 India. India also. Here No, again, two points okay. that 2 points that Ravi Shankar have made and Bansal is also making. One aspect is that Virat Kohli is actually not a great T20 player. That's what Ravi Shankar is saying. Bansal is saying is the problem more batting than bowling itself. Bowling भी अच्छा सुताई होनी है क्योंकि पाटा विकेट्स है, लेकिन बैटिंग क्या वो डिलीवर कर रहा है, यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल स्टार्स, आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस मिल रहे हैं, बट KKR you are seeing people who are pulling up their weight, who are stepping up and doing beyond that, going beyond what is expected to them, or they're doing a notch above what is expected out of them. Like yesterday's match also, if you see, Jason Roy has given them that impetus at the top, but Nitish Rana as the captain comes good yesterday. And Rinku Singh, David Visa, वही 13 बॉल के अंदर उन्होंने फिर 28 रन बना लिए, 30 रन बना लिए, तो वो Sure. that was the difference between staggering somewhere around 180 190 and crossing or getting up to that double figure, in the sense that 200 number. No, एक चीज मैं आपको ये Now I'm saying KKR's problem has been that, right? Before they started to get these wins together, इनके जो दो मतलब ऐतिहासिक जीत थे, एक में शार्दुल ठाकुर, like मैंने कहा था, he played a once in a lifetime innings, और उसके बाद रिंकू सिंह ने played a once in a lifetime innings, right? So this team is going to struggle. I don't see them getting into the top 5 no matter what these wins, right? But Jason Roy के आने से at least अभी you're getting starts ना, आपने 7 मैच में आपने 6 या 5 ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपने ट्राई किए, जब आप चॉपिंग एंड चेंजिंग करते हो मैचेस जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन रॉय के आने से एटलीस्ट समवन इज ट्राइंग टू गेट देम स्टार्ट्स. कल दे गॉट 83 and 9.2 overs from what they were doing before with all your Gurbazes and Mandeeps and all. They were disastrous. This guy's at least getting you starts. Narayan Jagdishan had 5 and 0 yesterday. His strike rate was 98, but at least he played some kind of role, right? So at least Kolkata has tried to identify things. RCB, माफी चाहूंगा अगर यहाँ पे कोई फैन जुड़े हैं, इनकी बैटिंग शुरू होती है ओपनर से, खत्म होती है ओपनर से. मैक्सवेल 14 में से 6 बार चलेंगे, 3 बार चल चुके हैं, अब वो अगले 3 पारी कहां पे आएंगे, एनीवन्स गेस. एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा आरसीबी के बारे में. एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमने 6 होम गेम्स की बात कर ली है, सब कुछ बात कर ली है. आई थिंक दिस इज वेयर आरसीबी सीजन इज गोइंग टू गो डाउन द ड्रेन, और उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ. क्योंकि आप देखिए, आपने 6 होम मैचेस खेल लिए हैं इस टाइम. आप टेबल पे कितने मैच जीते हैं? आपने 8 में से केवल 4 जीते हैं. 3 होम गेम आप हार चुके हो. they've lost 3 home games. They've lost 3 home games and they've अब इनको आगे गेम जीतने पड़ेंगे और डिफिकल्ट होगा. हाँ, अब इनको 6 में से 5 अवे गेम्स खेलने हैं, ठीक है? और उन अवे गेम्स में you are going to see various different conditions. आप ईडन गार्डन्स चले, वहां पे you got perfect conditions, you lost that game as well. KKR has done the double over RCB this season. So the point here is, and it's very simple, कि अब आप अलग-अलग conditions में खेलोगे, अलग ग्राउंड में खेलोगे, जहां पे आपको nobody is going to give you an inch. Yep. चलिए आज के मैच की बात करते हैं. आज के मैच में अभी बताया जा रहा है कि ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे हैं. एडम जाम्पा हैज कम इनटू द टीम फॉर राजस्थान रॉयल्स. राजस्थान रॉयल्स टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहा है. आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर संजू सैमसन जीतते हैं तो देन ही स्टॉप्स अ हैट्रिक ऑफ लॉसेस अगेंस्ट धोनी. एक दूसरा, राजस्थान रॉयल्स देन स्टैंड टू गो टॉप ऑफ द टेबल अगेन. And once again, it will be a point to prove for somebody like Sanju Samson, who I somehow get the sense is trying to mold himself around MS Dhoni. He's trying to be the keeper, batsman, captain, like Dhoni was, trying to bring that calm, trying to stay composed, and somewhere trying to model himself around Dhoni without saying it out loud. मुझे ऐसा लग रहा है, I don't know if you guys agree with that. बट जिस तरह से इस बंदे ने अपनी टीम को मार्शल किया है, जिस तरह से अपनी टीम को हैंडल किया, और इसकी टीम में भी स्टार्स है. राजस्थान रॉयल्स की टीम में बेस्ट पार्ट ये है कि इंडिविजुअल स्टार्स भी हैं और कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस भी इनकी अच्छी रही हैं.
जैसे all of us have got Rajasthan Royals penciled in their top 4 teams in this season so far. So halfway through the season, Rajasthan Royals still remains among our list of top 4 teams to make it into the playoffs. So that's interesting. Unchanged side for Chennai Super Kings, I'm given to understand. Chetan. Yes, I'm just looking at their playing 11. Rayudu, Pretorius. वही है. नहीं, मैं उनका वो देख रहा था impact player. तो Rayudu will. Yeah. So yeah, I mean, it's no surprising that they have an unchanged side. Because the more you have watched the way he's helped his bowlers, the young bowlers, to come, Tushar Deshpande, Akash Singh, how impressive has he been? Now you have got Tikshna and that guy. What is his name? Patirana. Patirana. The more you see that, the more this CSK side is getting into that groove, jo you associate with the CSK side. Upar se Rahane and Dubey, they've got a clear cut. Matlab, that has been so impressive to see. CSK ne unko bola hai ki jab aap outside Chennai khel rahe ho, where they are pata wickets, go on the attack. लाइसेंस दिया हुआ है रहाने और दुबे को पीट के मारने का. एंड इट इज सच क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्योंकि उसके बाद आपके पास राइडू भी बैठा है, उसके पास आपके पास धोनी भी बैठे हैं, उसके बाद आपके जडेजा भी बैठे हैं, मोइन अली भी बैठे हैं, एंड ऊपर आपके पास ऋतुराज और कॉनवे हैं. दे सेट द मोमेंटम. It is such clarity of thought. It is amazing to see. सीजन से पहले हमने यही कहा था, सीएसके की ये टीम धोनी ने स्पेशली तैयार की है टू विन दिस टूर्नामेंट, एंड एवरी इंडिकेशन इज. हम लोग लास्ट वीक तक बात कर रहे थे जीटीएन आरआर की रिपीट फाइनल हो सकता है. सीएसके, आई एम टेलिंग यू, इज राइट देयर. इट कैन बी अ सीएसके फाइनल वंस अगेन. Yep, बिल्कुल. I agree exactly what he's saying, because it's, and Chennai की team, they don't take anything less than a playoff spot. Trophy जीत गए, fantastic, but playoffs तक पहुंचना, that is the minimum they think, and they had one bad year, they're written off, they bounce back and win it in 21. वही है, all signs are कि इस बार वो जो farewell का शोर चल रहा है, it just goes back to exactly, I mean, there's no better way to say than clarity of thought. See, आज धोनी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली. I'm just quoting him. He says कि at the end of the day, you need characters. We are trying to build characters, trying to convince them to focus on the process. The result doesn't matter. We are playing the same side. This is what he has said. Building characters. Of course, you're already seeing Akash Singh as a character. You're seeing Tushar Deshpande becoming a character. And that Mahesh Patirana by default is bringing you the Malinga. The absent Malinga in the IPL is that boy, and by giving him that last over in that match number 2, match number 3, this boy is different. Look at that, he's just getting better with each match. There was this tweet, Tikshna or Patirana ko, Dhoni is preparing them from Sri Lankan cricket. Imagine these two learning the tricks of the trade with Dhoni and excelling with Sri Lanka. And Sri Lanka is a very decent T20 side at the moment. Yeah. Baki formats mein they may not be able to do a lot against top 5 teams. But Ireland भी उनके खिलाफ 492 मार रहा है, भले उन्होंने 704 but T20 side, they are a very threatening T20 side. I think next year के World Cup में they'll be ones to watch. But yeah, I mean it's interesting the way it's happening, and yeah. Not just that, भाई धोनी उनको भले ही श्रीलंका को तैयार कर रहा हो, लेकिन धोनी अगर डगआउट में बैठा रहा इंडियन टीम के साथ, उनको देख के बोलेगा इसको कैसे मारना है. तो ये श्रीलंकन में आनंद ये श्रीलंकन बहुत खुश होंगे, क्योंकि धोनी ने जॉश हेजलवुड को 6 महीने बाद वर्ल्ड कप विनर बनाया, सैम करन को 1.5 साल बाद वर्ल्ड कप विनर बनाया. तो अगर ये दोनों बन गए वर्ल्ड कप विनर्स ऑफ एनी फॉर्मेट, Patirana and Tikshna, the Sri Lankan government will give Dhoni a couple, islands and some government award. Yeah, this man has it. He knows how to build. He's talking about building character. He can build character. He can also build characters. It's a halka sa slip of the tongue probably. Building character and building characters. ये इंसान दोनों कर सकता है. ये कमाल का आदमी है ये. राजस्थान की बात करनी होगी, अपने पिछले 2 मुकाबले हार चुके हैं. हाँ, वही तो. The last team they beat was these guys by a whisker, thanks to Sandeep Sharma. Yeah, even that match was going. That was the 2.2 crore match. Yeah. And since then they have lost 2 matches on the run, and they are not the top team in the table anymore, or they're for first time in this season they are looking very beatable.
और जॉस And Butler's got anda in both matches. And Butler's form has coincided with their downfall, and that is correct. जब हम dependency की बात करते हैं तो they're still very dependent on Josh Butler. मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बटलर भी वापस आएगा और ये देखिए पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें, आज राजस्थान रॉयल्स जीतती है तो दे गो टॉप ऑफ द टेबल, ऑल्दो दे गो टॉप ऑफ द टेबल इंटरेस्टिंगली इक्वल ऑन मैचेस which becomes very interesting. Even though Gujarat Titans have a match in hand and they can also come back, then they can go bounce up. They can bounce above this one, above CSK and RR. But somehow one gets the sense that the first 2-3 teams who get up to 12 points are assured of a top 3, top 4 place. And if these 3 teams get to 12 points in the next 1 or 2 matches that they are playing, then that makes the life tougher for the likes of Lucknow, RCB, Punjab to get in that place, and even tougher for somebody like a Mumbai Indians. So अगर आप देखें तो मोरलेस ये सेटल होता दिख रहा है यहाँ पर, ये बीच का जो है नंबर 4 to number 7 या नंबर 8 यहीं पे बसड़ लगती है टॉप 3. Which is why I said कि RCB को प्रॉब्लम आएगा, because they had a run of 6 home matches at a stretch. Out of their first 8 games, they should have been sitting at number 2 or number 3 to make sure that they get into the top 4. They are going to play in Delhi, they are going to play in Hyderabad, they are going to play in Jaipur, जहाँ पे आपको variable bounce मिलेगा, variable pitches मिलेंगी. आपके पास टीम ही ऐसी है जो सिर्फ बैटिंग ब्यूटी पे रन्स बना सकती है, तो आप क्या करोगे? It's going to be a nightmare for RCB. यार देखो यार, आरसीबी का थॉट प्रोसेस देखो ना. आरसीबी के पास रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, एडम जाम्पा, 3 स्पिनर खिला रहे हैं लोग. नहीं आरआर, मैं आरसीबी की आरआर, हाँ सॉरी, मेरे मुंह से आरसीबी निकल गया, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग. आरआर की बात कर रहा हूं. आई एम लुकिंग एट द आरआर टीम ओनली. आरआर टीम में देखो ना, इनका थॉट प्रोसेस देखो ना यार, ये 3 स्पिनर खिला रहे हैं, बड़े नामी स्पिनर खिला रहे हैं लोग. जाम्पा, चहल और अश्विन तीनों हैं इसमें. प्लस इनके पास पेस बॉलर्स हैं, संदीप शर्मा है, जेसन होल्डर है जो बॉलिंग कर सकता है, तो ये भी. सो आई एम जस्ट सेइंग एक चीज बहुत वियर्ड यहाँ पे होती है आरआर की लाइनअप पे, अगर हम देखें ना, इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग. इनकी जो बैटिंग फर्स्ट करके जो टीम है उसमें दे हैव 6 bowling options. They don't need to use an impact player. They don't use an impact player who's a bowler when they are batting first. It is such a strong. I think overall, अगर देखा जाए, who's the 6th? Very strong. No, but they only have 5 options. Who's the 6th option? कौन? 1, 2, 3. They only have 5 bowlers. 5 ही हैं. Trent Bolt is आज 5 है. हाँ, it's problematic. This is problematic. They only have 5. You have no 6th option. So if one bowler has a bad day, who's going to bowl? Okay, so last match they had Bolt instead of Zampa. But no Holder. Again. No Zampa. Yeah. No, Holder was there. Holder was there. They only, unless they're playing Riyan Parag, they only pick 5 bowlers every match. They only pick 5 bowlers. Which is what I'm saying. Even when they are batting first, they pick their first 5 bowlers. This is the first choice playing 11. It's very strong, and no other team does this. No other team does this. And उनका आप देखो, अगर आप देखो till Zampa they also bat यार. ऐसा नहीं है ना कि till number 8 they bat deep also, no. Batting all rounders में जेसन होल्डर तक वो बैटिंग कर सकता है. तो But I'm surprised they've shown zero faith in Holder. They've impact player than their weakness. बहुत ही इस बंदे को भेजा नहीं इन्होंने. On his day, the guy can get you 18 off 3 balls. But they've lost faith in him. Strange. I just have a feeling they're saving him up for the back half. आज मुझे लग रहा है कि अगर इनके नीचे तक की बैटिंग आई तो आज there's no point waiting. Yeah, he has to feel back on ball, no. और जिस तरह से अश्विन बैटिंग कर रहा है, जिस तरह से रविचंद्रन होल्डर कर रहा है, नहीं मैं कह रहा हूँ जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन बैट कर रहा है उसको कैसे नहीं भेजोगे? वो भाई साहब लास्ट मैच में आया, बॉल में ऐसे धाम धूम मार के गया, मैच का सूरत ही बदल दिया उसने, आउट हो गया. एवन मॉर्गन ने लास्ट मैच में बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी जब अश्विन केम अहेड ऑफ होल्डर. Evan Morgan said कि Ashwin thinks of himself as a top order batsman. But a top order batsman is able to pick the change in pace, which Ashwin is not able to. So just because you're thinking yourself as a top order batsman doesn't mean you are. You are. ये Ian Morgan ने on air कहा था, and that is why he wanted Holder to come ahead of Ashwin. And absolutely that is what happened, because Ashwin next ball पे change of pace नहीं pick कर पाए थे. जब उन्होंने single लेना चाहिए था, वो catch out हो गए. So Evan Morgan was not wrong. आज के मैच में कौन किसकी तरफ है? जेमी, who do you pick? यार
very very tough to look past this Chennai team यार. So you believe कि आज का मैच तो जीतेगा तो चेन्नई ही? Yeah, I think so. चेतन? Just before I say that, Murugan Ashwin and KM Asif, they could be because they're batting first, they could be sixth bowling option for Rajasthan, depending on कि हमने कहा ना कि उनके bowler पिटते नहीं हैं, तो वो 5 bowler use करते हैं. अगर कोई पिट गया तो they can bring in Murugan Ashwin और KM Asif. They have those options. कौन जीतेगा ये मैच? फिर spin options ही नहीं, KM Asif is pace. KM Asif is pace. KM Asif is medium pace. I have a feeling KM Asif will come on today because they only have Holder and Sandeep Sharma. Bolt नहीं है. Anyway, कौन जीतेगा ये match? Unless and until Butler scores big, I think CSK will win this, and today they will establish themselves as tournament favorites. Wow. So 2 for Chennai. I think I'll back RR at home. सवाई मानसिंह स्टेडियम घर पे अगर नहीं जीता तो कहाँ जीतेगा? आज ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन और उसकी टीम ढंग से करेगी, अच्छा खेलेगी. चेन्नई will play well, of course, but one gets the feeling that RR will put a score that Chennai will not be able to chase. There's a reason why Sanju Samson, without thinking twice, when he won the toss, he said that they want to bat first. So it's not going to be easy for if RR is able to put a 160, 170 plus total on this ground, Chennai is not going to find it easy to chase. One gets that feeling, but you never know. Chennai is Chennai. और उनका एक प्लेयर किसी का दिमाग घूम गया, वो पागलों की तरह बैटिंग करके चला गया, तो मैच का वही सूरत घूम जाएगी. एनीवे, देखा जाएगा. चलिए दोस्तों, आज की इस बात को यहीं लवली विराम देते हैं. कल मैं आपसे नहीं मिलूंगा. कल मैं थोड़ा इलेक्शन के काम से बेंगलुरु जा रहा हूँ. तो फिर मंडे आपसे फिर मुलाकात होगी. Fantastic, lovely. फिर मिलते हैं. Have fun. Bye bye. See you.